Hello students. So in our previous video, we have discussed analog electronics and op-amp, some topics. Chapter number 1, PN junction diode. Chapter number 2, special semiconductor devices. And chapter number 3, rectifier circuits and filters. So we'll continue from that. Chapter number 4, transistors. Okay. So there may be some background noises. You can ignore those background noises. Okay. So chapter number 4 रे तमर कोन अछि देखो फर्स्ट थिंग होची प्रिंसिपल ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सो ट्रांजिस्टर मेनली टू टाइप्स ट्रांजिस्टर जो अछि तमर मेनली टू टाइप रो ट्रांजिस्टर बीजेटी बीजेटी एंड एफईटी BJT and FET bipolar junction transistor and FET field effect transistor. So in chapter number 4 we will deal with BJT bipolar junction transistor, and further in chapter number 7 we will deal with FET field effect transistor. So तमरो chapter number 4 transistor रे कौन कौन अछि देखो फर्स्ट हैला प्रिंसिपल ऑफ bipolar junction transistor, next होछि different modes of operation of a transistor, third होछि current components of a transistor, and fourth होछि transistor as an amplifier and next होछि transistor connections, that is common base, common emitter and common collector, and their configuration along with their characteristics. So exam रे तमरा क्वेश्चंस कोन आसपारे एग्जाम रे तमरा क्वेश्चंस आसीपारे गोटे क्वेश्चन होची वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और सिंपली ट्रांजिस्टर वर्किंग आसीपारे वर्किंग प्रिंसिपल. Okay, working principle. And second questions they may ask what are the modes of transistor, mode of transistor 2 max रे भी आसीपारे और 5 max रे भी आसीपारे. नेक्स्ट है तमरा जो current component of transistors अच्छी, so in that there is a relation, that is alpha, beta and gamma. Alpha, beta, gamma गोटे derivation अच्छी and तार relations अच्छी. So सेटा गोटे questions आसी पारे exam रे. And आउटे questions होची common base, common emitter and common collector, different types of configuration or different connections of transistors along with their characteristics भी आसी पारे question रे. Okay, so a chapter तमरा 3-4 questions आसपे. Also transistor as an amplifier, this is very important. एटा important गोटे transistor as an amplifier and alpha beta gamma ए दिटा होची आ तीनटा क्वेश्चन important. ए चैप्टर तीनटा क्वेश्चन important. गोटे होची connections, different connections, transistor is an amplifier and alpha beta gamma and their relations. Okay, so without any further discussion let's start this topic. Okay, so previously मुझे already discussion करथिले. Previously we have discussed PN junction and their working and different types of तमरा PN junction रो तमरा connections along with तारो biasing विषय में discussion करथिले already. Okay, so you are having P type and N type semiconductors, and there is junction, that is PN junction. So PN junction, P type, N type semiconductor merge करले तमरा PN junction होतला, and simply you can say this is a diode, PN junction diode or simply a ordinary diode. Okay, so diode रे previously हमें देखितले already तमरा कोन अछि forward biasing, reverse biasing connection भी देखितले. Okay, so P type को जदि हमें बैटरी रा positive and N type को जदि बैटरी रा negative connect करिवा, this will be your forward bias, and the reverse connect करिवा सेटा जे reverse bias. Reverse connection means कोन P type को हमें connect करिवा तमरा बैटरी रा negative and N type को हमें यदि connect करिया बैटरी रा positive, reverse यदि connect करिया that will be reverse bias. All of these things we have discussed in the previous video. Okay, now in this chapter transistor. Okay,
सो ट्रांजिस्टर कौन ट्रांजिस्टर तमर होची तमर ऑलरेडी ओके ऑलरेडी पीएन जंक्शन अच्छी सो यू आर हैविंग पीएन जंक्शन तो तमर पीएन जंक्शन रहला पीएन जंक्शन ओके सो पी टाइप एंड एन टाइप रहला अगेन आमे कौन करवा आ गोटे तुम सेमीकंडक्टर आइदर पी टाइप और एन टाइप जदि आम कनेक्ट करवा ऑलरेडी पी एन जंक्शन अच्छी अगेन जदि आम आ गोटे तुम पी टाइप सेमीकंडक्टर आम जदि ऐड करदे ए जगह ओके पी टाइप सेमीकंडक्टर जदि आम ऐड करदे पी एन एंड अगेन वन मोर पी टाइप सेमीकंडक्टर जदि आम ऐड करवा दिस विल बी ए ट्रांजिस्टर ओके ट्रांजिस्टर कौन है तीन टा जंक्शन है सॉरी दीटा जंक्शन है जंक्शन J1 एंड जंक्शन J2 टू पीएन जंक्शन एंड पीएन जंक्शन टू जंक्शन एंड यू आर हैविंग थ्री लेयर तीन टा टर्मिनल अच्छी पी टाइप पी रो लेयर पी रो टर्मिनल एन रो टर्मिनल एंड अगेन पी रो टर्मिनल सो पीएनपी ट्रांजिस्टर ओके सिमिलरली तमरा पीएन अच्छी पीएन जंक्शन अच्छी अगेन जदि आम गोटे एन टाइप सेमीकंडक्टर जदि आम ऐड कर दवा दिस विल बी एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर ओके सो सिंपली कौन करवा आ गोटे टू पी दीटा पी मझे गोटे एन रो सैंडविच कनेक्ट कर बा दीटा एन मझे गोटे पी को सैंडविच टाइप रो कनेक्शन जदि कर मर जदि कर ट्रांजिस्टर पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर बुझीगला so the transistor is a device okay so which having two junction and three layer and three terminal devices okay dita junction है pn junction and तीनटा layer है pnp बुझीगला so transistor दीटा type तमरा pnp transistor and npn transistor this is all about your BJT bipolar junction transistor bipolar junction transistor okay so npn आउ pnp transistor तमरा अछि okay तो ये सब मैक्सिमम बहुत सारे दिन से हम डिस्कशन करते प्रीवियसली ओके सो यहाँ हूँ ट्रांजिस्टर देखिए ये टाइप रो ट्रांजिस्टर सिंबल हूँ ट्रांजिस्टर तुम सिंबल ओके तो ट्रांजिस्टर सिंबल ए सब विषय तुम ऑलरेडी फर्स्ट सेमिस्टर भी पढ़ी ट्रांजिस्टर आम जो सिंबल अच्छी कहले ट्रांजिस्टर गोटे सर्कल रे आम सिंबल ड्र करवा देख यहाँ गोटे लाइन रहा ओके सो ट्रांजिस्टर एवं प्रीवियसली मैं जस्ट डिस्कसन करी कौन एनपीएन ट्रांजिस्टर आ गोटे अच्छी कौन ना पीएनपी ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर ओके ये गोटे एरो मार्क रहा तीनटा टर्मिनल ओके सो यहाँ तुम बेस कलेक्टर एंड इमिटर जोड़ा एरो मार्क रहा एमिटर एरो जदि आउटसाइड अच्छी दैट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर आउ से जो एरोटा एरो जो रहा एरो तुम जदि भितर रहा एरो जदि इनसाइड एरो जदि रहा दैट इज ए पीएनपी ट्रांजिस्टर सो यहाँ हूँ पीएनपी ट्रांजिस्टर ओके सो आम जो प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कशन करते एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर सो तीनटा तुम जो लेयर थिला लेयर 1 2 3 तीनटा जो लेयर थिला तीनटा लेयर नेमिंग कराई नेमिंग कौन नेमिंग होची इमिटर ई बी बेस एंड कलेक्टर
emitter base collector, emitter base collector, emitter base ଆଉ collector। so emitter ରେ ସବୁବେଳେ error mark ରହିବା ମନେ ରଖ। emitter ଯଦି ବାହାରୁ error mark ରହିଲା that is npn transistor, ଆଉ emitter ରେ ଯଦି ଭିତରୁ error ରହିଲା that is pnp transistor। now you are having two junction, ଦିଟା junction ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି base emitter junction, base emitter junction, ଆଉ ଗୋଟେ base collector junction, ବା simply you can say one is emitter junction and the other one is the collector junction। most of the case the emitter junction is input, emitter junction is input, and the output junction is the collector junction, is the output junction, collector junction is the output junction। and remember very important point, that is input side is always forward bias, input side is always forward bias, and output side is always reverse bias, always reverse bias। for a proper transistor operation you need to forward bias in the input side and reverse bias in the output circuit। okay, this is simple basic things। so npn transistor or pnp transistor एडा हैला ता देखिए पे एवडा, and this is a symbol, एडा तमर symbol। okay, this is a symbol। so a transistor consists of two pn junctions formed by sandwiching either p type or n type semiconductor between a pair of opposite types, hence transistor is classified into two types, namely npn and pnp, npn और pnp। simple thing, गोटे pn junction रे another type of p or n type semiconductor जदि हमें doping करी merge करिवा then resulting device टाइप हबो तमरो ट्रांजिस्टर। बुझी हला ट्रांजिस्टर डेफिनेशन आराम से लिखि पारियो। एंड इंपोर्टेंट दी मार्क रे भी क्वेश्चन आसी पारे। नेमिंग पचारि पारे, तीनटा नेमिंग अछि तमरो होचे इमिटर बेस कलेक्टर, इमिटर ओके इमिटर बेस कलेक्टर EBC, इमिटर बेस एंड कलेक्टर, इमिटर बेस आउ कलेक्टर अछि। बुझीला। सो ट्रांजिस्टर ऑपरेशन देखिया वाले एडा तमरा ट्रांजिस्टर ऑपरेशन, सिंपली तम फॉरवर्ड बायस आउ रिवर्स बायस होचे ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। ओके, सो एडा हिला तमरा कोन बाहर रहिछि एरो मार्क देखि पारे, एरोडा बाहर रहिछि कहले एनपीएन ट्रांजिस्टर, एरो भितरु अछि सेडा अछि पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर हला एनपीएन हो बा पीएनपी ट्रांजिस्टर बहुत इजी तार वर्किंग देखो सिंपल एडा हैला कोन तमरा एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड प्रीवियस जस्ट मु एबे कहउतली जे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो बा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो तमरा ट्रांजिस्टर प्रॉपर ऑपरेटिंग करिया पई तो तमरा कोन हो इमिटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस। ओके, इमिटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस। तो एडा हैला कोन तमरा एनपीएन। ओके, एनपीएन तो एन साइड को, ओके एन साइड को तमरा इनपुट साइड शुड बी फॉरवर्ड बायस, राइट। सो एन साइड को आमे जदी बैटरी रा नेगेटिव जदी कनेक्ट करिया ऑटोमेटिकली पी रा कनेक्ट हवा पड़े। बुझिला। सो जदी हमें एन को एन कनेक्ट कले सेडा तमरा कोन फॉरवर्ड बायस हबो, राइट। सो फॉरवर्ड बायस हबो एंड मु प्रीवियसली कोन कहली इनपुट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस एंड आउटपुट शुड बी रिवर्स बायस। ओके, आउटपुट एडा कोन अछि एन टाइप रा। ओके, एन टाइप रा एन जदी अछि एन को जदी हमें पी कनेक्ट करवा देन दैट विल बी योर रिवर्स बायस। सो एन को कोन कनेक्ट करे देखो बैटरी रे पी कनेक्ट कराइ छी। बुझिला। सो एडा होची प्रॉपर ऑपरेशन हबो, एडा तमरा ट्रांजिस्टर बायसिंग कोआ होची हला। सो एडा कोन हैला आल्सो एड तमे देखि पारिबो जब बेस टर्मिनल, दिस इज द बेस टर्मिनल, दिस मिडिल टर्मिनल इज द बेस टर्मिनल E B C, emitter base collector। So base terminal is connected to both input as well as output. So base is common to input and output. So this is a connection of a common base connection. So we'll discuss later different types of connections like common base, common emitter and common collector. Okay, NPN transistor with forward bias, emitter base junction should be forward bias and collector junction should be always reverse bias. Very simple. Okay, this constitutes the emitter current IE. As these electrons flow through the p-type base, they tend to combine with holes. Okay, so n type re tamara kon achi, n type re tamara achi, n type, this is n type. So n type re tamara electrons guda achi, once tamara jodi flow hobo
सो तुम इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक कम्बाइन आसो पी आड़ आसो सो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ये तुम पेयर कॉम्बिनेशन हो बुझीगला as the base is lightly doped and very thin therefore only few electrons combine with the holes to constitute base current so base current kichi small amount of current flow hobo okay and the rest current will flow to the collector current most of the 95% current will flow through the collector current in this way almost the entire emitter current flows through the collector current it is clear that emitter current is the sum of the collector current and the base current it is one very important IE emitter current equal to your base current plus your collector current and IB is about only 5% and IC is the 95% of IC total 100% IE the current is 5% IB and collector current is 95%. That's why IE almost equal to your IC means IC the value almost equal to IE kind of IB the both small amount of current flows but that is also important because the output current IC that output current can be controlled by the small amount of current IB later we'll discuss that okay similarly जदि तुम एग्जाम रे क्वेश्चन आसला वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिस्टर सो एनपीएन आ पीएनपी रे तुम दिला डायग्राम करिवो सेम ऑपरेशन सब किछि सेम खाली तुम डायग्राम दिला रहइबो एनपीएन एनपीएन पीएनपी सिमिलरली जदि पीएनपी ट्रांजिस्टर हैला यू कैन इजीली do the connections inside the input of forward bias output of reverse bias easily connect kari paribo so this is a p type so p type को हम यदि पॉजिटिव को p कनेक्ट कर दवा दिस विल बी फॉरवर्ड बायस सिंपल थिंग एंड दिस इज p को हम यदि आउटपुट टा रिवर्स बायस हो p को यदि हम n कनेक्ट कर दवा दैट विल बी रिवर्स बायस बुझिएला बहुत इजी सो एडा हैला वर्किंग प्रिंसिपल नेक्स्ट कोन देखो next is different modes of operation of transistor okay different modes of transistor operation saturation cutoff active and reverse active both easy things मन रखो the transistor acts in saturation mode different mode रे transistor status or transistor operating thing transistor situation विषय explain कराए चला so saturation region रे saturation mode रे कोन अब transistor act like a short circuit simply transistor कोन अब ना short circuit वाला behave करिवो current freely flows from collector to emitter input junction and output junction both are in forward bias मु कोन कहतली input side should be forward bias output should be reverse bias for a proper operation in active region active mode रे ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग करिया पे इनपुट शुड बी ऑलवेज फॉरवर्ड बायस ए तमे डायग्राम रे भी देखला इनपुट इज फॉरवर्ड बायस आउटपुट इज रिवर्स बायस बट दीडा साइड रे इनपुट एज वेल एज आउटपुट रे इनपुट एज वेल एज आउटपुट जदि हमें फॉरवर्ड बायस करिया इन दैट केस कोन हो द ट्रांजिस्टर विल बी ऑपरेटिंग इन द सैचुरेशन मोड ऑपरेटिंग करियो ट्रांजिस्टर टा शॉर्ट सर्किट वाला बिहेव करियो ट्रांजिस्टर प्रॉपर वर्किंग करिवो नाही okay so कौन अब both input and output junction are in forward bias बुझिला next होची cut off okay cut off गोटे प्रकार open circuit वाला behave करिवो no current will flow through the circuit input junction and output junction both are reverse bias obviously दिले reverse bias कले current flow होबो कि previously हमें pn junction रे discussion करथिले pn junction हमें discussion already करथिले जे तमरा forward bias रे current flow होबो reverse bias रे current flow होबो नाही okay so saturation region both side forward bias cut off region both side reverse bias current flow हबनी एडी current flow अधिक current flow हबो short circuit हेबो next is active region is a normal region that is operating input side is forward bias and output side is reverse bias okay so current from the collector to emitter is proportional to the current flowing to the base input junction is forward bias output junction is reverse bias okay so first आइला both forward second आइला both reverse third आइला forward reverse तापर reverse forward उल्टा कर दबा so सेटा reverse active एरा ओके लाइक एक्टिव मोड वाला एटा रिवर्स कर दबा हला
reverse current flow about emitter to collector input junction for reverse bias, output junction forward bias. उल्टा कर दो एड़ा हेला तमर. But transistor should be always active, should be operating in the active mode. Active mode transistor should be connected. बुझीगला एड़ा हेला तमर transistor रा transistor modes. Next हेला current components in a transistor. Current component होचे alpha, beta, gamma. And next time a transistor different connections देखिबे और transistor is an amplifier भी देखिबे. So transistor different connections देखा बहुत easy connection. So common base, common collector, common emitter. जेहेतु transistor तीनटा तमर अछि कोन तीनटा टर्मिनल अछि कोन अछि base अछि. Okay, base, emitter and collector. बेस इमिटर एंड कलेक्टर. सो जो सर्किट भी जो टर्मिनल भी कॉमन करिवो सेटा कॉमन हो जिवो. सिंपल थिंग. जदि हमें बेस को कॉमन करबा कनेक्शन कोन हो सीबी कनेक्शन, दैट इज कॉमन बेस कनेक्शन. जदि एमिटर को कॉमन करबा कॉमन इमिटर हो, राइट. जदि कलेक्टर को कॉमन करबा सीसी ला कोन हो ना कॉमन कलेक्टर हो. तमे कयो पचारियो क्वेश्चन कोन जे हम कॉमन करिया को पडुची काहे की. ओके कोन पे कॉमन करिया को पडुची देखो. ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर, राइट. एडा है तमरा ट्रांजिस्टर एन पी एन और पी एन पी व्हाटएवर इट मे बी. ओके एन पी एन हो बा पी एन पी हो. सो टर्मिनल के तरह 1 2 3 तीनटा टर्मिनल अछि. फॉर इनपुट फॉर इनपुट यू नीड टू टर्मिनल फॉर इनपुट पई तो दीटा टर्मिनल दरकार, दीटा वायर दरकार. आउटपुट पई भी दीटा वायर दरकार फॉर आउटपुट. तो टोटल वायर केतरा रहला बा टोटल टर्मिनल केतरा दरकार 1 2 3 4 चारटा वायर दरकार. बट एडी केतरा अछि तीनटा अछि. दैट्स व्हाई वी हैव टू कॉमन one terminal to both input as well as output. बुझियला. सो एबे नाउ you can see दीटा टर्मिनल हेला आउटपुट भी दीटा टर्मिनल हेला. बट टर्मिनल तीनटा जेतु थिला दैट्स व्हाई वी हैव टू कॉमन इन one टर्मिनल. गोटे टर्मिनल को तमो कॉमन करिया को पड़िबो. बुझा पड़ियला. सो जे कोनसी टर्मिनल को भी कॉमन करी पारिबा. इमिटर को, बेस को, कलेक्टर. नाउ विल डिस्कस अबाउट सीबी कनेक्शन, कॉमन बेस कनेक्शन. बहुत इजी जिंस. फर्स्ट तमे सिंबल कर दला. ओके जोडा कॉमन करबो ताको तळु रखि देबो. ए जो बार टाइप रो छि गारडा छिडा बेस टा ना एडा छि बेस टा. आ जोडा एरर रहला सेडा होछि इमिटर आरडा कलेक्टर. एंड रिमेंबर वन थिंग, always try to represent collector in the output side रे तमे collector को represent करिवो. बुझियला. सिंपल. ओके नाउ सिंपल इक्वेशन कोन IE इक्वल टू IB प्लस कोन IC प्लस कोन IC. एंड ए जो एरो मार्क रिप्रेजेंट द करंट डायरेक्शन. एरो मार्क टा करंट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करछ. एडा होछि NPN ट्रांजिस्टर टा NPN ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर. जेतु एडा कॉमन बेस टा कॉमन अछि. सो तमरा एमिटर एरो मार्क होछि एमिटर. सो ए जो डायरेक्शन हैला I करंट डायरेक्शन कोन हैला I. एंड I इज इक्वल कोन IB प्लस IC. दैट्स व्हाई IB एपडा फ्लो होबा दरकार, IC एबडा फ्लो होबा दरकार. काई ना IB प्लस IC मिसले तो I हेबो ना. बुझियला. सो दैट्स व्हाई दिले करंट डायरेक्शन कोन भितरु हेला. बुझा पड़ेला ना. नाउ तमे जे बैटरी कनेक्शन करिवो दीटा बैटरी जो कनेक्शन करिवो कोन करिवो इनपुट शुड बी फॉरवर्ड बायस, आउटपुट शुड बी रिवर्स बायस. ओके एडा कोन NPN ट्रांजिस्टर. सो दिस इज N साइड टा N को जदी तमा N को N कनेक्ट करिवो ऑटोमेटिकली P तो आसी जीवन एबडा. सिमिलरली एडा कलेक्टर टा एडा कोन N दा आउटपुट शुड बी रिवर्स बायस. N साइड को थ्रू ए लोड थ्रू N साइड को जदी हमें P कनेक्ट कर देबा ऑटोमेटिकली तो एपट साइड रे N कनेक्ट करियो ना. जदी एडा P हेला ऑटोमेटिकली बैटरी रो गोटे P हेला गोटे N गोटे पॉजिटिव हेला गोटे नेगेटिव टर्मिनल होला. N को P कनेक्ट करलो आउ एपट साइड रे लेफ्ट साइड रे N को N कनेक्ट करलो. N को जदी N कनेक्ट कर सेडा फॉरवर्ड बायस हेला. दिस इज ऑल अबाउट NPN ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस NPN ट्रांजिस्टर. आल्सो PNP ट्रांजिस्टर पे सेम सिंबल कलो. जस्ट एरो मार्क टा तळु कर देलो. एरो मार्क टा तळु कलो. सो एडा हेला कोन PNP ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर. So input side, that is emitter junction, this junction is the emitter junction, should be forward bias. So P को P connect कर दो, P को positive connect कर लो.
ऑटोमेटिकल तो एडी नेगेटिव आसीजो नेगेटिव देखा दरकार जस्ट खाली तुम इनपुट साइड आउटपुट साइड देख सिमिलरली आउटपुट साइड देखो आउटपुट साइड कलेक्टरटा पी अच्छी सो पी को तुम जब नेगेटिव कनेक्ट कर दो उल्टा जब कनेक्ट कर दो रिवर्स बायस हम दिस शुड बी फॉरवर्ड बायस दिस शुड बी रिवर्स बायस बुझीला सो ईच केस रे फॉर कॉमन बेस कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर सिंपल डायग्राम करिवो एनपीएन और पीएनबी पई एंड बैटरी कनेक्ट करियो फॉरवर्ड बायस एंड आउ रिवर्स बायस बहुत इजी एक्सप्लेन करिया बहुत इजी एटा so here input signal is given between emitter and collector first point hela base is common to both input and output second point hela tamara input side is input signal is given between emitter and collector का भितर input side दियाला input signal ला emitter collector भितर input signal दियाला output signal ला को through नियाला output signal or output is taken from collector and base each case रे लिखी परिवार आराम से now in this case the current amplification factor output current by input current amplification factor for common base is alpha equal to current amplification factor alpha equal to output current by input current जेहेतु बेस टा कॉमन है आउट करंट कौन कलेक्टर एंड रिमेंबर वन थिंग मोस्ट ऑफ द केस है आउटपुट टा कलेक्टर कॉमन बेस एटा होची कॉमन बेस आउटपुट कौन आउटपुट करंट आईसी बाय इनपुट करंट आईई इनपुट करंट कौन आईई सो अल्फा इक्वल टू आईसी बाय आईई दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिया पड़ियो कौन पे कहीं अल्फा बीटा गामा रिलेशन अच्छी डेरिवेशन भी अच्छी से बुझा पड़ो फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर अल्फा बीटा गामा फॉर्मूला फॉर अल्फा कॉमन बेस कॉमन है बेस कॉमन जदि आउ कौन रहा कलेक्टर एंड एमिटर एंड मोस्ट ऑफ द केस रे कौन कहली आउटपुट कलेक्टर सो आईसी बाय आई बहुत इजी मन रखि पारे सिमिलरली विल डिस्कस नेक्स्ट कॉमन एमिटर एटा है कॉमन एमिटर जस्ट एमिटर टा कॉमन करियो जोडा को कॉमन करिवे ताको तळु रखि दो डायग्राम रे एमिटर कॉमन कला एमिटर मु तळ रखि देले एमिटर टा कॉमन हैला बोथ इनपुट एंड आउटपुट रची नाउ this is your npn transistor so npn transistor right npn transistor so p को पॉजिटिव कनेक्ट कर लो फॉरवर्ड बायस हैला एंड दिस इज n साइड n को उल्टा कनेक्ट कर दो n को p कनेक्ट कर दो सेडा हैला कोन रिवर्स बायस हैला Similarly, this is PNP transistor, PNP transistor. So N को N कनेक्ट कर लो फॉरवर्ड बायस हैला P को N कनेक्ट कर लो रिवर्स बायस हैला बुझियला okay for this case the input is given first thing हैला your emitter is common to both input and output second point हैला the input is given between your base and emitter out third point है output is taken from collector and emitter and current amplification factor in this case common emitter पाए emitter टा common है मन रख कौन emitter टा common है and output टा कौन मु कहतली collector टा so for common emitter the current amplification factor beta equal to output current IC by input current कौन IB कहीं एमिटर तो कॉमन हो जाए ना सो IC by IB so here IC output current equal to cross multiply जदि करिवो IC equal to beta times IB that's why I कहतली previously this IB is very important IC that is output current can be controlled by IB current जदि vary करिवो IC current भी vary हेबो केते times vary हेबो beta times vary हेबो for example beta equal to 100 okay and IB equal to suppose 1 ampere IB equal to 1 ampere IB equal to 1 ampere so output current केते हला output current केते हबो output current तमर हबो IC equal to 100 into IB1 equal to केते हला 100 ampere now IB को यदि small value vary कर लो
है जदि 2 एम्पियर करदेल ओके 2 एम्पियर कला पिटा के 100 अच्छी सो 100 इंटू 2 के 200 बुझीगला बहुत बढ़ीगला डबल होगा पूरा पाखापाखि है स्मॉल अमाउंट करेन्ट बढ़ले भी एटा कौन बहुत बढ़ीगला बुझीपार ना ओके नेक्स्ट है तुम कॉमन कलेक्टर कनेक्शन सो कलेक्टर इज कॉमन जो जोड़ा कॉमन करे सेटा तळु रखिदब ओके कलेक्टरटा कॉमन कले तळु रखिदल ओके ओके टिके समय रही तुम फॉरवर्ड कर टिके आगु फॉरवर्ड कर दो हला टिके पर हम पढ़ेबी ओके सिमिलरली कॉमन कलेक्टर केस रे कलेक्टर को तुम कॉमन कर दबा जोड़ा कॉमन करे तळु रखि दबा कलेक्टरटा कॉमन हेला नाउ तमर टास्क कोन टास्क हो जे इनपुट should be forward bias output should be reverse bias so this is the npn transistor npn transistor so p को positive and most of the case मु कोन कहतली तमर आउटपुट कोन आउटपुट को हमें कलेक्टर को आउटपुट हिसाब रे ट्रीट करबा कलेक्टर को हमें आउटपुट हिसाब रे कोन ट्रीट करबा कलेक्टर कोन मोस्ट ऑफ द केस रे आउटपुट हिसाब रे ट्रीट करबा बट ए जगह रे ठीक अछि ए जगह रे तमर कोन अब देखो ए जगह रे तमर जेतु कलेक्टरटा कॉमन हेला राइट कलेक्टरटा कोन हेला कॉमन हेला कलेक्टरटा कोन कॉमन हेला एटा तळे कलेक्टर छै ना तळे कलेक्टर से कलेक्टर एटा बेस एटा एमिटरटा जोडा एरो मार्क रो छेडा एमिटरटा जो कॉमन जेतु कलेक्टरटा हमर तळे अछि एंड मु कोन कहतली आउटपुट सब बेले कलेक्टर को चेक देखिबो तम माने बैटरी कनेक्शन कलाडो कलेक्टर ही देखिबो सो कलेक्टर आईडी कोन अछि एन अछि कलेक्टर आईडी कोन अछि एन अछि एन को पी कनेक्ट करार अछि एन को पी कनेक्ट कराओ एडा हैला तमर कोन ना रिवर्स बायस सिमिलरली एडा होछि पीएनपी ट्रांजिस्टर सो पीएनपी ट्रांजिस्टर सो एन को एन कनेक्ट करला हैला कोन फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज पी सो पी को कलेक्टर पी को एन कनेक्ट कर दबो रिवर्स कनेक्ट कर रिवर्स बायस हैला बुझियला नाउ ए जगह कोन ना करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज गामा इक्वल टू आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट जेतु कॉमन हैला कोन कलेक्टरटा कॉमन हैला सो आउटपुट तमर कोन अछि आउटपुट एडा कोन एमिटरटा सो एमिटर करंट आईई बाय इनपुट करंट कोन आईबी इनपुट करंट कोन आईबी बुझा पड़ेला ना सो नाउ अल्फा बीटा गामा रो रिलेशन ओडे करबा हला अल्फा बीटा गामा रो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा और गामा अल्फा बीटा और गामा सो हमर जो ओजेई रो क्लास होने की टेकपेंट क्लासेस सो से ओजेई रो क्लास हो वीडियो माने नोट्स उडा हमर सो अल्फा प्रीवियसली ऑलरेडी कॉमन बेस पे मैं कहतली अल्फा इक्वल टू कोन अल्फा इक्वल टू आईसी बाय आईई अल्फा मन रख कोन कॉमन बेस पे बेस कॉमन हेला आउटपुट रे कोन अछि कलेक्टर इनपुट रे कोन थिबो एमिटर थिबो काइना बेस ता कॉमन हेला जोडा कॉमन हो सेडा यूज हमन नेक्स्ट बीटा इज फॉर कॉमन एमिटर जदी कॉमन हेला आउटपुट रे कोन अछि कलेक्टर एमिटर ता कॉमन हेला कोन थिबो बेस थिबो सो आईसी बाय आईबी सिमिलरली गामा इक्वल टू
गामा इक्वल टू कॉमन कौन कॉमन कलेक्टर कलेक्टर जदि कॉमन है आउटपुट कौन थी एमिटर थी आई तले कौन बेस करेंट आईबी सो अल्फा इक्वल टू आईसी बाय आईई बीटा इक्वल टू आईसी बाय आईबी gamma equal to IE by IB. Okay, now we'll see relation between alpha and beta, alpha beta, alpha gamma beta and gamma, relation between alpha and beta. Okay, relation between alpha beta and beta gamma beta देखिए वाला. सो अल्फा बीटा भितर रिलेशन कर कहले फास्ट रे अल्फा लेख तापर बीटा लेख ला अल्फा इक्वल कोन को अल्फा इक्वल टू आईसी बाय कोन आई आईसी बाय कोन हला आईसी बाय आईबी आईसी बाय आईई एंड आ गोटे सिंपल फार्मूला मन रख ऑलरेडी कहि साची आईई इक्वल टू आईबी प्लस कोन आईसी. So this is equal to IC divided by IB जगह IE जगह हमें लिख पारे कौन IB प्लस कौन IB प्लस IC एंड जेहेतु मुझे कौन कर ना रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा कर अल्फा ऑलरेडी लिखि देछि आ बीटा इक्वल मु जानि कौन ना IC बाय IB कौन IC बाय IB जेहेतु ऊपर न्यूमरेटर पार्ट देख न्यूमरेटर ऑलरेडी IC अछि दैट्स व्हाई मु कोन करी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर IB डिवाइड करी सो मु ए जगह कोन कली IB डिवाइड कर देली एंड एडी भी IB डिवाइड कर देली एडी भी IB डिवाइड कर देली बुझा पड़ेला ना एबे देखो कोन बेटा IC by IB माने कोन बीटा सो दिस इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय IB by IB कोन 1 सेम ना IB by IB माने कोन 1 प्लस IC by IB कौन IC by IB कौन बीटा सो अल्फा इक्वल टू कौन आसला अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 1 प्लस बीटा अल्फा इक्वल कौन आसला बीटा बाय 1 प्लस बीटा अल्फा इक्वल बीटा बाय 1 प्लस बीटा similarly we can also derive the relation between beta and alpha so alpha equal to already beta by 1 plus beta अछि तो सेना लेखो देखो अल्फा इक्वल टू कौन अच्छे बीटा बाय 1 प्लस बीटा नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस क्रॉस मल्टीप्लाई जदि करिवो हमको कौन मिलियो एडा सो आसीबा हमर अल्फा प्लस एडा मल्टीप्लाई कर रे हला अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू कौन इक्वल टू बीटा सो here alpha equal to beta minus a alpha beta da plus होगी right side को minus हो so minus alpha beta minus कौन alpha beta so from this simple equation so output देखो alpha equal to common हमें यदि बीटा कॉमन कर दा बीटा यदि हमें कॉमन कर दा कौन रहेगा 1 minus alpha रहेगा 1 minus alpha रहेगा एंड हियर ए जगह में यदि बीटा काढिया चाहिबा सो बीटा इक्वल टू अल्फा इन अल्फा 1 माइनस अल्फा जो मल्टीप्लाई रे अछि एडा को हम यदि शिफ्ट करबा कोन हो डिवाइड हो सो अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा सो बीटा इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा सिमिलरली तुम सब जा मन रखिया पड़िबो एग्जाम रे गोटे 10 मार्क क्वेश्चन आस पारे हला तमरा अल्फा बीटा गामा भीतर रिलेशन डिराइव करिया पे आसीबो सो अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 1 प्लस बीटा बीटा इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा गामा इक्वल टू 1 by 1 minus alpha and alpha equal to gamma minus 1 by gamma and here तमरा gamma equal to 1 plus beta and beta equal to gamma minus 1 सो ये सब जा तुम मन रखिया पड़ियो आ डिराइव करे भी तुमको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करी लिखिया को पड़िबो फॉर ए 10 मार्क्स क्वेश्चन ओके सो एडा हेला कॉमन बेस सॉरी एडा कनेक्शन रो कॉमन बेस कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर तापर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन से गेला ट्रांजिस्टर डिफरेंट करंट कंपोनेंट भी हेला डिफरेंट मोड्स भी पढ़ देली एंड बेसिक प्रिंसिपल भी पढ़ देली आ खाली गोटे रहला ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर्स रहला
एंड ता सहित तुम कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ा भी करिया पड़े कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखियो होला ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स सो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट हला इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एडा हला इमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दीडा कैरेक्टरिस्टिक्स रहउची इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का भीतर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द कर्व बिटवीन emitter current IE and the emitter base voltage हला emitter base voltage at constant collector base output हला collector base माने output voltage टा constant CB बुझियला so the current हला एडा होचे IE VI characteristics रे voltage current characteristics so x axis रे voltage को voltage टा input voltage and output voltage sorry and input current and input current and input voltage and input current by keeping the output voltage constant VCB constant for VCB 0 voltage curve तमरा एवडा आछि देखो for VCB 0 voltage this curve for VCB 10 voltage this curve and for different voltage this curve will be like this एवडा curve आसी पारे हला so curve गुडा गोटे मन रखिबो this input characteristics IE versus VBE and VCB is a constant keeping constant output characteristics होची तमरा output characteristics होची output current versus IC versus output voltage VBC and input current constant by keeping input current IE constant for different IE value the curve for different IE value output current and output voltage by keeping input current as constant 0 milliampere 1 milliampere 2 milliampere for different the curve is like this simply general term एडा हैला तमरा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इजी वंस रीड कर लेबे बुझ पारे एडा पीडीएफ में पठा देछि okay so characteristic of a common emitter by characteristics so for common emitter this is the connection ला common emitter by कोन इनपुट आउटपुट common emitter रे इनपुट करंट कोन हबो emitter द common हैला ना इनपुट करंट कोन हबो emitter द common हैला देख पारिबो इनपुट तो कॉमन हैला ना इनपुट यदि कॉमन हैला बेस करंट सॉरी इनपुट कोची आईई डा कॉमन हैला इमिटर यदि कॉमन हैला इनपुट टा कोन बेस आउटपुट टा कोन कलेक्टर सो इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज VB इनपुट वोल्टेज बेस और इमिटर भीतर वोल्टेज ता इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट होचे आईबी करंट मेजरमेंट करिया पे कोन कराई गुडे एमीटर और वोल्टमीटर यूज कराई कहीं ना भी कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स तो मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक्स मन रखिया पड़े किसी ग्राफ मन रखिए आराम से तुम एक्सप्लेन कर पारे इनपुट है आईबी आउ आउटपुट है VB सो एवडा कर्व आसला तो रीड करबो टिके बुझिबो टिके कर्व मन रखियो कर्व आराम से ड्रा करे कुछ भी लिख पारे आराम से सिमिलरली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कोन आईसी एंड आउटपुट वोल्टेज VC ला बुझियला एडा कर्वडा तार आछे ओके अब अल्फा बीटा गामा ऑलरेडी मु कहि देछि अल्फा बीटा गामा रिलेशन आराम से एक्सप्लेन करि पारियो नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ओके ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर दिस इज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ओडा एग्जाम रे 5 मार्क्स रो क्वेश्चन आसीबो सिंपल डायग्राम कर देलो हला एक्सप्लेन कर दो मैं देखो एडा ओडा एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर अछि एनपीएन ट्रांजिस्टर अछि सब बेस को कोन कराछि बेस रे दिडा रेजिस्टर यूज कराछि एटा एक्चुअली वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मागु पढेले बुझा पड़े बायसिंग नेक्स्ट चैप्टर रे बायसिंग डिफरेंट टाइप रे बायसिंग अछि बेस कनेक्शन बायसिंग वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग कलेक्टर फीडबैक बायसिंग डिफरेंट टाइप रे बायसिंग अछि हम पढेले आउरी बुझा पड़ जाय प्रॉपर्ली सो सिंपल थिंग कोन हला तमरा एडा होछि इनपुट ओके इनपुट तमे सप्लाई दे देला इनपुट वोल्टेज दे देला इनपुट स्मॉल अमाउंट रे वोल्टेज देले भी आउटपुट वोल्टेज बढ़ी जीवो केन बढ़ियो देखो बहुत इजी जिनसला सो आउटपुट एडा होछि आउटपुट कोन आईसी कलेक्टर करंट होछि आउटपुट करंट एडा आउटपुट वोल्टेज दिस इज आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस दिस आउटपुट वोल्टेज सो एडा होछि आरई कनेक्शन अछि एडा तमरो आरसी
कलेक्टर रेजिस्टेंस टा एंड इनपुट बेस रे दीटा रेजिस्टर अछि R1 एंड R2 एंड इनपुट वोल्टेज दियाला एंड तमर सर्किट को ऑपरेटिंग करया पे VCC सप्लाई वोल्टेज दिया अछि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर सिंपल थिंग देखो व्हेन ए वीक एम्पलीफायर मीनिंग फर्स्ट एम्पलीफायर कोन जानो हला एम्पलीफायर फर्स्ट जानो तापर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूज होछि एम्पलीफायर मीन्स तमे नॉर्मली भी जानि छ आमे जो स्पीकर रे यूज होछि एम्पलीफायर रे कोन काम कोन ता काम होछि एम्पलीफायर होछि गोटे वीक सिग्नल रो स्ट्रेंथ को गोटे वीक सिग्नल अछि जदि एम्पलीफायर यूज करी एम्पलीफायर यदि यूज करी एम्पलीफायर कोन करबा आउटपुट रे जो वीक सिग्नल रो स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दबो तार स्ट्रेंथ को बढ़े देबो एम्पलीफायर को जगह यूज होछि साउंड सिग्नल रे यूज होछि साउंड तमरा वॉल्यूम जगह रे एम्पलीफायर आमे यूज करछे एम्पलीफायर बॉक्स यूज करछे स्मॉल अमाउंट रो वोल्टेज को इजीली कंट्रोल करी कोन लाउड स्पीकर रे यूज करि पाछि ना नहीं सेडा होछि एम्पलीफायर so first amplifier definition लिख पारियो when a weak signal is given to the base of the transistor input base weak signal would 0.1 voltage very small amount of voltage signal use कला due to तमर कोन होछि बीटा रो value is very high बीटा रो value is very high reason कोन reason तमे ऑलरेडी जानि पारियो मु ऑलरेडी पढ़े साची बीटा इक्वल कोन बीटा इक्वल टू IC by कोन IB and previously already कहि साची मु IB रा वैल्यू होछि केते ना 5% only 5% जदि डिनोमिनेटर रे स्मॉलर वैल्यू डिवाइड करछो देन दिस वैल्यू विल बी लार्जर ऑब्वियसली हायर वैल्यू आसीबो ना नहीं हायर वैल्यू आसीबो सो सेडा एम्पलीफाई करछ ड्यू टू ट्रांजिस्टर एक्शन a much larger beta times current IB flows through the collector current already कहि सारछि so beta equal to कोन हैला beta equal to IC by कोन IC by IB hence IC equal to कोन IC equal to beta times IB with smaller example भी मु कहि साथले previously already वीडियो जो देखिथियो हला मु कहली कोन जे beta रे वैल्यू वेरी हाई IB रे वैल्यू स्मॉल वैल्यू नले भी IC रे वैल्यू कोन होछि लार्ज होछि एग्जांपल भी देइथले 1 एम्पियर 2 एम्पियर देइथले 1 एम्पियर नले के दे बीटा यदि 100 होछि 100 एम्पियर हैला 2 एम्पियर कले जस्ट 1 एम्पियर बढ़ेला किंतु सेडी कोन डबल हैला केते 100 टा 200 हैला बुझा पड़ेला ओके सिमिलरली ट्रांजिस्टर आराम से एम्पलीफाई करि पाछ सिग्नल वीक सिग्नल रो स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दोछ एंड सिंपल डायग्राम भी एड करि पारे ओडे इनपुट स्मॉलर डायग्राम इन कल आउटपुट ओडे लार्जर डायग्राम एवडा तमे करि पारिबा हला आउटपुट रे तमरो लार्जर डायग्राम इन करि so this is all about the chapter number 4 so chapter number 5 विषय डिस्कशन करिया देखो chapter number 5 रे कोन देखो chapter number 5 होडी ट्रांजिस्टर सर्किट्स डिफरेंट सर्किट्स so ट्रांजिस्टर बायसिंग जस्ट मैं कहउतली डिफरेंट टाइप रो ट्रांजिस्टर बायसिंग अछि बेस रजिस्टर मेथड कलेक्टर हला कलेक्टर टू बेस रजिस्टर मेथड तापरे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग तीनटा मेथड अछि कलेक्टर फीडबैक भी अच्छी डिफरेंट मेथड भी अच्छी 3-4टा मेथड अच्छी सो ए जगह कौन हम ना एग्जाम रे क्वेश्चन कौन आसीबे एग्जाम रे आइदर कौन बेस रजिस्टर मेथड एक्सप्लेन करो ना कलेक्टर रजिस्टर मेथड एक्सप्लेन करो ना वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग एक्सप्लेन करो और से करियो कहबो क्वेश्चन करियो एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग एक्सप्लेन डिफरेंट ट्रांजिस्टर मेथड ऑफ बायसिंग एंड ए जगह किछि बिट क्वेश्चन जगह अछि देखो 2 मार्क के क्वेश्चन अछि 2 मार्क के क्वेश्चन कोन अछि 2 मार्क के क्वेश्चन अछि what is biasing second है stabilization and stability factor and another bit question होची what is the need of biasing what is the need of biasing these are some bit questions and previously जो ट्रांजिस्टर bit question कोन ट्रांजिस्टर bit question होची तमरो डिफरेंट मोड खाली मोड विषय पचारि पारे नल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर नल ट्रांजिस्टर टर्मिनल नल कॉमन बेस नल कॉमन इमिटर नल कॉमन कलेक्टर को गोटे डायग्राम करिया कहबो नल तो एनपीएन पीएनपी रो सिंबल पचारि पारे बुझी गेला नल अल्फा बीटा गामा रो जस्ट गोटे रिलेशन पचारि पारे नल द डेफिनेशन पचारि पारे माने अल्फा कोन बीटा कोन गामा रो फॉर्मूला पचारि पारे नि मार्के सेबडा आसी पारे सो एडा हम डिस्कशन करिया what is biasing need of biasing तापर stabilization stability factor कोन तापर डिफरेंट टाइप्स ऑफ biasing छोटो चैप्टरटा ओके फर्स्ट हैला व्हाट इज बायसिंग
biasing माने कौन ना for a proper operating condition input should be forward bias and output should be reverse bias. This is called your biasing. Okay. Basic function of a transistor कौन amplifier हवा दरकार amplify हवा दरकार. So for that you have to do the faithful amplification. For faithful amplification तुम कौन कौन करिया पड़ियो किछि कंडीशंस करिया पड़ियो. The conditions should be satisfied. Those are proper zero signal collector current. Again मु रिपीट कर देखा बारंबार रिपीट कले मन रे जीवाराम सेडा. Proper zero signal collector current, proper zero signal collector current, minimum proper base emitter voltage, input ta कोन base emitter, output ta collector emitter. So proper minimum voltage and proper minimum collector current, collector voltage. Input voltage should be proper, output should be proper, and proper zero signal collector current. Zero signal collector current. So definition is very important. 2 marks देखो. The proper flow of zero signal collector current and maintenance of a proper collector emitter voltage during the passage of signal is known as transistor biasing. माने transistor biasing माने कौन ना proper zero signal collector current and proper collector emitter voltage को maintain करियो. केतल maintain करियो जेतल supply signal pass करथो ता through रे transistor through रे ताकू कहउची transistor biasing. नेक्स्ट है कौन नीड ऑफ बायसिंग. नीड ऑफ बायसिंग 2 मार्क्स पचारि पारे बहुत इजी जिंस देखो. फर्स्ट है इट शुड एंश्योर प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जोड़ा डेफिनेशन सेटा आगे तार नीड है. तापर इट शुड एंश्योर प्रॉपर कौन वीसी जो अच्छी वीसी शुड बी प्रॉपर मीन्स कौन 0.5 वोल्टेज फॉर जर्मानियम एंड 1 वोल्टेज फॉर सिलिकॉन है फॉर एटा होची सिलिकॉन ट्रांजिस्टर. दिस इज सिलिकॉन एसआई ट्रांजिस्टर मान सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एटा लगी जाइए एसआई ट्रांजिस्टर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर. जर्मानियम एटलिस्ट मिनिमम केते रहा दरकार 0.5 वोल्ट रहा दरकार जर्मानियम आ सिलिकॉन 1 वोल्ट. प्रीवियसली चैप्टर नंबर 1 जतले पढितली मु कहली जर्मानियम सिलिकॉन तमर सेमीकंडक्टर गुडा को तापर हेला तमर कोन नीड आ कोन इट शुड एंश्योर स्टेबलाइजेशन ऑपरेटिंग प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट आसीबा दरकार. नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन. दी मार्क रे क्वेश्चन आसपारे व्हाट इज स्टेबलाइजेशन and need of stabilization aspect. Proper making operating point independent of temperature changes or variation in transistor parameter. मान देखो जो ऑपरेटिंग पॉइंट अच्छे ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग पॉइंट प्रॉपर्ली रहबा दरकार. इट शुड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज हेले भी सेटा चेंज ना दरकार. आ ट्रांजिस्टर जो वैल्यू पैरामीटर अच्छी आईबी आईसी वीसी वीबी जहाँ भी ट्रांजिस्टर जो पैरामीटर जहाँ अच्छी ताको भी वेरी कले भी जो ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी सेम सेम रहबा दरकार. स्टेबल होबा दरकार. स्टेबलाइजेशन कोन नीड ऑफ स्टेबलाइजेशन कोन होबा दरकार इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इंडिविजुअल वेरिएशन भी ना दरकार. थर्मल रन आवे बुझिरा एंड थर्मल रन आवे कोन देखो दी मार्क रे क्वेश्चन आसपारे द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन हला अनस्टेरिलाइज्ड और अनस्टेरिलाइज्ड नहीं अनस्टेबिलाइज्ड एक्चुअली अनस्टेरिलाइज्ड किछ ना आछिंदी अनस्टेबिलाइज्ड ट्रांजिस्टर इज नोन एज थर्मल रन आवे माने प्रॉपर जे स्टेबिलाइज करबानी हीट बॉडी जीवो हीट बॉडी से ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग करेनी ब्रेकडाउन है जीवो सेल्फ ऑटोमेटिकली नहीं जे डिस्ट्रक्शन है जो ताको थर्मल रन आवे कहउची. स्टेबिलाइजेशन जदी प्रॉपर है नथियो सेडा प्रॉब्लम क्रिएट करबा. नेक्स्ट गुड दी मार्क क्वेश्चन आसपारे व्हाट इज माने स्टेबिलाइजेशन फैक्टर. द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट IC with respect to WRT माने with respect to the collector leakage current ICO. So simple thing collector current by leakage collector current. Okay at constant beta equal to IC by IB. So output कौन IC. So stability factor is the rate of change of that is delta IC by delta of ICO कौन ना leakage current of collector current at constant beta. So this is very important 2 marks exam आसपारे. तापर आमे नेक्स्ट डिस्कशन करबा डिफरेंट मेथड्स फॉर बायसिंग. So this is a base resistor method and एडा होची collector feedback method आउट होची तमरा voltage divider biasing.
एटा बहुत इजीटा है तीन जगह पढ़ेदेवी बहुत इजी जस्ट सर्किट डायग्राम मन रखा पड़ो आउ तुमको इनपुट एंड आउटपुट जस्ट केवीएल यूज करा पड़ो है केवीएल यूज करा पड़ो सो मु फास्ट रे केवीएल तुम जब भूल जाइछ फास्ट मु केवीएल टा कहि दो देखो तापर जाई तुम कोन करबा है केवीएल देखो ओके V1 R1 V2 R2 V3 R3 okay assuming there is a current flowing I current flowing now KVL Kirchhoff's voltage use करिया Kirchhoff's voltage ला बहुत इजी जिनसटा ओके सो एटा पॉजिटिव सो पॉजिटिव रे बाहरला सो V1 पॉजिटिव माइनस ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर इज I into R वोल्टेज ड्रॉप रा फॉर्मूला कोन रे कर V equal to एज पर ओम्स लॉ V equal to I into R V equal to I into R so R1 अक्रॉस रे वोल्टेज ड्रॉप केता हो I into R1 एंड जेतु वोल्टेज ड्रॉप सेडा मु कोन नेगेटिव नेची नाउ V2 टा कोन प्लस अछि प्लस रे बाहर सो प्लस नेला प्लस कोन प्लस V2 एंड R2 अक्रॉस रे वोल्टेज ड्रॉप केता हो I into R2 माइनस I into R2 कहना ड्रॉप टा नेगेटिव ना बोल कहली माइनस कोन I into R2 एंड एडी देखो एडा माइनस रे बाहर छी नेक्स्ट एडा पुट जाउछ तो करंट इन जाउछ ना ओके माइनस रे बाहरला जोट बाहरला सेट देखो माइनस रे बाहरला सो माइनस V3 एंड R3 एकस रे वोल्टेज ड्रॉप केता माइनस I into R3 इज इक्वल टू कोन 0 दिस इज द इक्वेशन दिस इज कॉल्ड KVL Kirchhoff's voltage law Kirchhoff's voltage so each circuit रे हमें जस्ट Kirchhoff's voltage लॉ यूज करिया बहुत इजी जिनसटा मन रख तुम डायग्राम मन रखिया पड़ो ओके डायग्राम मन रखिया पड़ो सो फर्स्ट इला बेस रजिस्टर मेथड बेस रे रजिस्टर उडे यूज हेछि बेस रे रजिस्टर यूज हेछि बेस रे रजिस्टर उडे यूज हेछि आरबी कलेक्टर रजिस्टर आरसी ओके कलेक्टर रजिस्टर आरसी एटा उडे एनपीएन ट्रांजिस्टर टा सिंपल थिंग रहला ओके एमिटर टा कॉमन अछि इनपुट एंड आउटपुट को एमिटर टा कॉमन अछि जानि परलो जोड़ा जहाँ अच्छे डिनोट कर दबो एडा अछि IB प्लस IC मिसी रे IE हबो ऑलवेज कोन IE इक्वल टू IB प्लस IC सो IB प्लस IC इक्वल टू IE जाना पड़छि ना एंड सर्किट टा ऑपरेटिंग करिया पे गोटे वोल्टेज सप्लाई दरकार VCC हेले सर्किट वोल्टेज ड्रॉप माने वोल्टेज दरकार ना कोन करबो आर सर्किट को एनालिसिस करिया पे कोन करबो इनपुट शुड बी ओके इनपुट एंड आउटपुट रे KVL इक्वेशन यूज करो Kirchhoff's वोल्टेज लॉ यूज करियो हला Kirchhoff's वोल्टेज लॉ यूज करियो ओके देखो एडा n अछि नेगेटिव साइड टा ठीक अछि एडा नेगेटिव एडा VCC पॉजिटिव लिखे देखो सो इनपुट सर्किट दिस इज द इनपुट सर्किट द पॉइंट A दिस इज द पॉइंट एडा पॉजिटिव डा पॉइंट एडा कोन पॉजिटिव डा मु कोन करबी ओके पॉइंट एडा पॉजिटिव अछि पॉइंट एडा कोन पॉजिटिव अछि तो मु एडा VCC जो एडी कनेक्ट अछि आकु ए जारे मु डिनोट न करी रे देख एडा पॉजिटिव दिला पॉजिटिव डा एडा इला पॉजिटिव VCC रो पॉजिटिव आउ नेगेटिव डा माने कोन न्यूट्रल नेगेटिव अछि हला देखो एडा पॉजिटिव डा एडा नेगेटिव डा जाना पड़छि एडे बैटरी डा कनेक्ट अछि VCC नाउ यू कैन इजीली implement KVL here एडा पॉजिटिव so एडो स्टार्ट करो सो ए लूप रे KVL यूज करि पारे आराम से यूज करि पारे देखो कोन हबो VCC पॉजिटिव अछि सो VCC माइनस वोल्टेज ड्रॉप इन दिस रेजिस्टर कोन हबो करंट केते IB रेजिस्टर केते RB सो IB into कोन IB into RB एंड जेहेतु करंट तळु फ्लो अछि तळु करंट फ्लो अछि ऑब्वियसली ऊपरटा पॉजिटिव तळुटा नेगेटिव सो VB so minus VBE equal to कोन equal to 0 is equal to 0 and VCC now in this equation देखो equation रे कोन हबो VCC is equal to कोन हबो दीटा जगह राइट साइड ने जो एडा को माइनस अछि प्लस हे जो माइनस अछि कोन जे प्लस हे जो सो IB into RB plus VB plus कोन VB
बुझीगला इक्वेशन जानी पाला ना एंड आल्सो आई बी इक्वल टू जानचो आई बी इक्वल कोन आई सी बाय बीटा माने कोन बीटा इक्वल टू तुम जानचो ना बीटा इक्वल जेहेतु आई सी बाय आई बी सो क्रॉस प्रोडक्ट करना क्रॉस मल्टीप्लाई कले कोन आई सी इक्वल बीटा टाइम्स आई बी हेंस आई बी इक्वल कोन आई सी बाय बीटा आई सी बाय कोन आई सी बाय बीटा so VCC equal to IB into RB plus BB okay and IB into जेहेतु एडा नाडा कोन बेस रजिस्टर मेथड सो दैट्स व्हाई हमें RB डा को कैलकुलेट करिया को चाहू छे RB को तमे इजीली कैलकुलेट करि पारिबो RB को तमे इजीली कैलकुलेट करि पारिबो देखो फर्स्ट जो हमर आस्तिला इक्वेशन डा VCC माइनस IB into RB माइनस VBE इक्वल टू कोन आसला 0 आसला इक्वल टू ओके टिके रही चार्जर टा लगो छे ओके इक्वेशन आसला ऑलरेडी नाउ तो आसला कोन ना VCC माइनस IB into RB माइनस VB इक्वल टू 0 आसला तो VCC कहीं काढिया हमको तो वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट RB तो आमे कोन करबा IB into RB IB into RB को मो राइट साइड नै जी राइट साइड नै ले कोन जियो पॉजिटिव है जो लेफ्ट साइड रे कोन रे लेफ्ट साइड रहइबो VCC माइनस VB माइनस कोन VB IB into RB को राइट साइड नै गेली IB into RB कोन मो राइट साइड नै गेली नाउ RB इक्वल के दबो नाउ RB इक्वल के दबो नाउ RB इक्वल टू नाउ RB इक्वल के दबो RB इक्वल टू एपट साइड तमे डिवाइड कर दबो हला RB इक्वल के दबो RB इक्वल टू IB को डिवाइड कर दबो IB को डिवाइड कर दो IB VCC minus VB by IB बुझेला RB इक्वल कोन VCC minus VB by IB बुझेला ना बहुत इजी जिनिस जस्ट के एक्सप्लेन कर दबो कोन है कोन नहीं सर्किट एनालिसिस कर दबो एडवांटेज डिसएडवांटेज बिटी लिख दो अदरवाइज फुल मार्क्स मिलियन वाली डायग्राम मन रखिबो और टिके सर्किट तो बुझे देली एक्सप्लेन कर देली तापर एला बायसिंग विथ फीडबैक रेजिस्टर मेथड सिमिलरली एडा भी तार सर्किट टा एडी तमे केवीएल यूज करिवो केवीएल यूज करले आराम से इक्वेशन आसी तो एला किछि प्रॉब्लम नाही सिंगल तापर सिमिलरली वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग ने भी हला करि पारे तमे आराम से एडा बुझी दे देखो सहज आसी किछि असुविधा नहीं सिमिलरली एडी तमे इनपुट लूप रे केवीएल यूज कर दो आसीबो VCC माइनस एडी वोल्टेज ड्रॉप होबो के एडी वोल्टेज ड्रॉप होबो व्हिच तारा करंट एंड तारा रेजिस्टेंस ओके करंट एंड तारा रेजिस्टेंस IC प्लस IB करंट हला किंतु रेजिस्टेंस कोन RC तापर माइनस कोन
ए रेजिस्टर ड्रॉप टा केते IB into कोन RB now a voltage टा केते minus VB equal to 0 केबल पुट कर दबो तो चलला सर्किट डायग्राम तम इंपोर्टेंट होची सर्किट डायग्राम मन रखे को पड़िबो सर्किट डायग्राम मन रखे लिख सिमिलरली वोल्टेज डिवाइडर बाय सिन ओडे इंपोर्टेंट प्रीवियसली ऑलरेडी एम्पलीफायर विषय कहतली एडी म कहतली दीडा रेजिस्टर जस्ट यूज हेची दीडा रेजिस्टर यूज हेची आराम से एडा भी ट्राई करो ठीक है एडा भी बुझिए वो ट्राई करो बुझ पारे कुछ प्रॉब्लम नहीं ओके तापर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आ ऑसिलेटर अछि तापर आ कोन रहला चैप्टर नंबर 678 678 आ तीनटा चैप्टर नहीं तो चैप्टर नंबर 6 रे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आ ऑसिलेटर अछि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आ ऑसिलेटर ए जगह रे तमो इंपोर्टेंट जा कहि दउची ओके मु जदी वीडियो बनै पारिनी एडी खाली तमो इंपोर्टेंट कहि दउची कोडा कोडा तमडी पढियो तो तमे पढिबो इंपोर्टेंट एडी पढिबो आशी कपल्ड एम्पलीफायर तो इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स क्वेश्चन आसीबो आशी कपल्ड एम्पलीफायर आशी कपल्ड एम्पलीफायर डायग्राम रहइबो आशी कपल्ड एम्पलीफायर आर आउ सी रहइबो आशी कपल्ड एम्पलीफायर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर देखो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट बड़ डायग्राम रा मन रखिया पड़ो दीटा ट्रांजिस्टर रहइबो दीटा ट्रांजिस्टर रहबे ईच रे तो रेजिस्टर यूज कर दो चारटा चारटा सरला हो एनपीएन ट्रांजिस्टर दीटा यूज होची हो हला बहुत इजी जस्ट डायग्राम दे एटलीस्ट कर दबो तमे आराम से सर्किट को बुझ पारियो ले एनपीएन ट्रांजिस्टर दीटा यूज करलो दीटा पैरेलल रे कनेक्ट करलो तापर एडी इनपुट रे गुडे कैपेसिटर दे कनेक्ट करलो एडी भी आउथरा आर आउटपुट टा नै आर इनपुट लगे दलो हला एडा सिंगल स्टेज डबल स्टेज रे डायग्राम देखाइ छला एंड सब जा तो रजिस्टर कनेक्ट कर दो गला ला ईच पॉइंट रहो आरसी आरई आरसी आरई R1 R2 R1 R2 सी इनपुट सी कले हला एडा कंबाइन करे लाइछ एति जिंस आ एडा कैपेसिटर लाइछ एडा डायग्राम कर दो एडा अछि इनपुट साइड आउट डायग्राम कर दो 10 मार्क्स रो सीयर क्वेश्चन डायडा एग्जाम रे मोस्ट ऑफ द टेस्ट आरसी कपल एम्पलीफायर नेक्स्ट है तमरो नेगेटिव फीडबैक भितर गोटे क्वेश्चन आसपे तापरे क्लास ए पुश पुल क्लास बी पुश पुल अछि पुश पुल रो एडा क्लास ए नल क्लास बी गोटे एग्जाम रे 10 मार्क्स रो क्वेश्चन आसी पारे तापरे एडी ऑसिलेटर अछि ऑसिलेटर बहुत सारा ऑसिलेटर अछि एडी तमरो अछि ट्यून 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 ऑसिलेटर हार्टली ऑसिलेटर कल्पित ऑसिलेटर फेस शिफ्ट ऑसिलेटर हला विन ब्रिज ऑसिलेटर नो मैथमेटिकल डेरिवेशन ओनली ए जो ऑसिलेटर गुडा अछि हला मु ट्राई करबी तुमको ठीक बुझिला पई तो ऑसिलेटर किछ नै डायग्राम जा करबो ऑसिलेटर फीडबैक एम्पलीफायर ऑसिलेटर जो डिफरेंट ऑसिलेटर अछि फीडबैक विषय मु कहि देबी नले नेक्स्ट क्लास ट्राई करबी आ वीडियो करबी पावर एम्पलीफायर ऑडियो एम्पलीफायर तमरा क्लास ए क्लास बी एम्पलीफायर अछि एडी क्लास ए पावर एम्पलीफायर ला पावर ए जो क्लास ए ऑडियो सिग्नल को बढ़ाई पाए आउट क्लास ए क्लास बी दीडा अछि क्लास सी नाइ बट नोट्स दे छै पुशपुल एम्पलीफायर ऑसिलेटर इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर हला एडा ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर एडा ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर तापर कल्पिट ऑसिलेटर डायग्राम ईच केस ऑफ द डायग्राम आउ हार्टली ऑसिलेटर एडा हार्टली ऑसिलेटर तापर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एडा फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एडा फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हला एतिया आउ एडा विन ब्रिज ऑसिलेटर गोटे ब्रिज रहयो एति अछि आउ एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बीजेटी एफईटी भीतर डिफरेंस गुडा आसपर एग्जाम रे पढि बेडा आ एफईटी रे भी एम्पलीफायर एफईटी रे भी तमर कैरेक्टरिस्टिक्स अछि डिफरेंट हला बायसिंग भी अछि कैरेक्टरिस्टिक्स अछि सेम एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर उपम भी सर अछि दिस इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर आई विल ट्राई टू हला उपम चैप्टर नंबर 8 उपम हैला चैप्टर नंबर 8 जान अछि कोन अछि चैप्टर नंबर 8 जान अछि so chapter number
chapter number 6, 7, 8. I will try to cover in the next video. यदि करूनी तमटिके देखिया पड़ो चैप्टर 8 रो तुमको इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर कंपैरेटर है ये सब करिया पड़ो एवरीथिंग इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये जाको मन रखिया पड़ो इन्वर्टिंग ओपम नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज फॉलोअर डिफरेंशियल एम्पलीफायर समिंग एम्पलीफायर सबट्रैक्टर इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर कंपैरेटर सब जाए सिंपल सिंपल गोटे डायग्राम हम एक्सप्लेन करिया ओके ओके महले हेली आउे पढ़ी पारे ना नेक्स्ट देखिए